Indian government has abstained from voting during the UNGA resolution for a ceasefire in Gaza. Sir, according to you, what do you think that this is the right thing for India to do at this moment, considering the situation that we see? There's been a lot of speculation in the media about this issue as to why India abstained after having voted in favor of a resolution in January of this year. Now, that speculation is based on the wrong reading of the resolution in January of this year. That resolution had clearly demanded that Hamas should release all the hostages, which it has not done. Neither the hostages who are presently alive, nor even the bodies of the hostages who were dead for some reason or the other. So, how can you vote in favor of a resolution which is based on non-fulfilled promises of Hamas? That is point number one. The second is that why have so many other countries voted in favor of the resolution and India has abstained? Now, if you are standing for certain principles in terms of UN and its hopefully moral traditions, then you do not have to follow the flock of the sheep. You have to take a stand on your own based on what you think is correct and procedurally the right decision for you to take. And I think India took the right decision in abstaining. It did not vote against the resolution. The speculations will continue for one reason or the other. I am not saying anything against that. But I think to criticize India without understanding the reasons for its abstention, that is misplaced. Sir, do you think that India, by abstaining, what according to you, what sort of message or image does it create globally about India? Well, I'm concerned more about the image that India has for itself as a country which stands on its principles. And it stands for its own sovereignty and also its own well-being in terms of security. One of the sort of sides in this resolution is Hamas. I think by now it is fairly clear, according to the reports which had been in circulation since the beginning of this year, that Hamas had actively participated in anti-India activities in Pakistan and in POK. It had also visited the headquarters of Jaish, had discussions with the leaders of Jaish, and Hamas's leaders had also gone to POK. There are also reports that Hamas had also given some tips to the Pakistani organizations which led to their execution of 26 Indian nationals, including one Nepalese national, in Pahalgam. So if there is an organization like Hamas which is blatantly indulging in anti-India acts, I do not see any reason for India to bend over backwards to please a terrorist organization on its own. The second thing is that tomorrow someone might say that, look, there's a resolution in the United Nations about Hafiz Saeed. Why should India abstain on that? Why should it not vote in favor of a resolution that Hafiz Saeed is not a terrorist? Now, these are illogical issues. They stand demolished on their own because of the unreasonableness of such a resolution. And Hamas worldwide is recognized as a terrorist organization. Some countries or other countries may vote in favor of a particular resolution for whatever reason, maybe because of the pressure from OIC or others. But India has to see the record of Hamas, the Palestine organization, with regard to its issues. Did Palestine, PLO, ever support India on Kashmir issue?
did PLO ever support India when Hindus were expelled out of Kashmir and in such miserable conditions and in such after such a massacre? So I think we have to keep issues in a perspective, especially historical perspective, of the other side's stand on issues which are essential and which are dear to India. But sir, as you're saying that if Hamas is considered to be a terrorist organization, why do you think so many countries have voted in favor? Well, as I said, that countries may have certain obligations of their own, whether in terms of their sympathies for example, Pakistan would obviously support Hamas. For example, the OIC membership would support Hamas. So there are a number of factors which go into decisions, even if from some points of view they are wrong decisions, which end up supporting and favoring in a massive vote organizations like Hamas. One question. Sir, India ने जो UNGA में वोटिंग रेजोल्यूशन सीजफायर गाजा में करने से एब्सटेन किए हैं, सर इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? क्या इंडिया के लिए ये सही था ये करना इस स्थिति को देखते हुए? इसमें काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया ने ये क्यों किया, इंडिया को ये ऐसा करना ठीक नहीं था, इंडिया को रेजोल्यूशन के फेवर में वोट देना चाहिए था, क्योंकि जनवरी में एक रेजोल्यूशन हुआ था ऑलमोस्ट इसी इशू पे, उसमें तो फेवर किया था, अब क्यों एब्सटेन किया? उसमें फेवर इसलिए किया था कि उसमें एक आशा की किरण थी कि जो बंदी बनाए गए थे हमास के द्वारा, और वो बंदी बनाए गए थे अक्टूबर 7 में, जिसको सारी दुनिया ने कंडेम किया, तो इसलिए इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को फेवर किया कि उस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि हमास सारे वो बंदियों को रिलीज कर देगा। वो तो उसने किया नहीं, अभी भी वो लोग बंदी हैं। तो फिर उस नए रेजोल्यूशन में उसके फेवर में वोट करना तो मॉरली तो वो गलत चीज होगी ना, कि भाई एक बार आपने रेजोल्यूशन को 6 महीने पहले वोट किया जिसमें कहा गया था कि बंदी सब रिलीज कर देने चाहिए, और जैसे मैंने कहा पहले भी कि वो बंदी अक्टूबर 7 में जहां सारी दुनिया को खौफ लगा था कि कैसा ये एक्ट किया है टेररिस्ट ने, तो जब तक वो चीज नहीं खत्म होगी इंडिया वो नहीं कर सकता ऐसे रेजोल्यूशन को सपोर्ट। और सेकेंडली ये रेजोल्यूशन कह रहा है कि सीज फायर कर दो विदाउट सॉल्विंग द मेन इश्यू। तो इसीलिए हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में जो है उन्होंने कहा था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी करिए, सीज फायर तो बाद में आएगी ना, कि जब जो इश्यूज हैं, जो प्रश्न चिन्ह हैं वो सॉल्व हों। तो जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे ना शांति होगी और ना ही जो मतभेद हैं वो खत्म होंगे। सर इतने सारे कंट्रीज ने भी फेवर में वोट किया है, आप उस चीज को कैसे देखते हैं? और इंडिया के लिए ग्लोबली एक क्या इमेज बनता है या फिर क्या मैसेज जाता है इस सिचुएशन के बाद, एब्सटेन करने के बाद वोटिंग से? देखिए, भीड़ चाल तो इंडिया ने कभी भी मंजूर नहीं की, और इस बार भी नहीं मंजूर की, तो अच्छा है, इंडिया के क्रेडिट में ही है कि उन्होंने एक स्टैंड लिया है सब इशू के सब पहलुओं को समझते हुए। जैसे मैंने कहा कि अगर मेन मुद्दा जो है, जो बेचारे हॉस्टेज इतने सालों से तड़प रहे हैं उनको नहीं आपने रिलीज किया, तो अगला स्टेप कैसे हो सकता है? और जहां तक कंडेमनेशन का सवाल है, तो वो इंडिया ने कभी भी कंडेमनेशन से झुके नहीं। अगर वो उसी का दुनिया की, स्पेशली ओआईसी की, अगर वो रेजोल्यूशन मानते हम, तो अब तो कश्मीर हम पाकिस्तान को दे चुके होते। सो ये जो इशू है कि भाई हाँ दुनिया ने ये किया, दुनिया ने वो सोचा, उससे इंडिया को ना कभी फर्क पड़ा है और ना ही आगे में फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि
इंडिया को ये भी देखना है कि उसके हित में क्या है। हमास हमेशा इंडिया के अगेंस्ट एक्ट करता रहा है। हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स जो हैं, वो पाकिस्तान में जा के पाकिस्तान को सलाह दे रहे हैं कि कैसे एंटी इंडिया एक्ट किए जाए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट है, उसके साथ तो इंडिया नहीं खड़ा हो सकता, और मेरे को खुशी है कि इंडिया नहीं खड़ा होता।